Amir Khan had called you after loot case and you weren't. Oh, he did. I was at home with some friends and was like, oh, it was a Friday evening. And we were just having a couple of drinks and all my friends are like this. So they'll call up in voices and you'll have a hard time saying who it is because it'll be from an unknown number. Chances are it'll be from his wife's number or a friend's number. So Eke spoke very sweetly to me and said, this is Amir Khan. Like, kaun jala Amir Khan? I said. So he started laughing and he said, we're going to do a video call. So then I hung up and I got a little nervous. ये 3 देवियों को डायरेक्ट करते हैं तो how challenging was it? क्या है कि ये तीनों इतने मंजे हुए लोग हैं, करेक्ट. तो तीनों को पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, तीनों को ही पता है कि क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. मतलब बिल्कुल तैयार होके आते थे, बिल्कुल स्टडी करके आते थे. Diljit and Kapil Sharma, how was it working with them? A dream come true. They were like a dream in the sense that I had only seen them. Everybody is grown up watching Kapil in the last a decade now. Riya, AK, all of us are very open to the idea कि आप कुछ interesting करो sir. So there were many options that they would give. Diljit is somebody who can. It's very hard for him to repeat a performance, repeat a take. So every take of us, we had a hard time in the edit to say कि अभी ये take लें कि ये take लें. Loot case में Kunal Khemo, what a fine comedian he is. I Absolutely. think he's just so He's a natural. genius. And yeah, after watching Madgaon, everybody uses Genius. this. See, Kunal can write, he can sing, he can dance, and now he can direct. Hi, this is Rajesh Krishnan, the director of Crew, and you're watching me on Bollywood Hungama. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइज. माय नेम इज उर्मिन. मार्च खत्म होने से पहले एक क्या फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया है और इस फ्लाइट के क्रू के पायलट यानी कि डायरेक्टर ऑफ क्रू हमारे साथ है राजेश कृष्णन. हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच. ओके, सो ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमारी कुछ बातचीत हो रही थी जिससे मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया कि दैट यू आर अ वेरी वेरी फनी मैन. हैव यू बीन टोल्ड दिस? I've only been told that and I have a hard time telling people कि no, but I'm fiscally very responsible. I'm very serious when it comes to monies. क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि दैट एक आदमी जो ऐसे इतने एक के बाद एक पंचेस मार रहे हैं, जब वो डायरेक्टर की भूमिका में आते हैं एंड ये 3 देवियों को डायरेक्ट करते हैं, तो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? चैलेंजिंग देखने जाए तो बिल्कुल नहीं था. ऐसा नहीं कि मैं बहुत माहिर हूँ और मेरे को मेरा काम पता है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार कानून, ऐसी बात नहीं है. क्या है कि ये तीनों इतने मंजे हुए लोग हैं, करेक्ट. तो तीनों को पता है कि स्क्रिप्ट क्या है, तीनों को ही पता है कि क्या करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. मतलब बिल्कुल तैयार होके आते थे, बिल्कुल स्टडी करके आते थे. रीडिंग के टाइम पे जो सवाल अगर समझ लीजिए, अगर उनके मतलब दिमाग से अगर निकल गया होगा वो बात, तो वो मतलब बाकायदा पूछते थे शूट के पहले. तो ये सारी चीज़ें जब ये होती थी तो आपको पता है कि ये लोग ऐसे स्टार नहीं बने. मेरी लाइंस क्या है, मेरा परफॉर्मेंस क्या है, ऐसे देखे तो साज नहीं बने ये लोग. ये सारे लोग सीन को बेटर कर रहे हैं. तो वो हिसाब से मतलब एक ये डायरेक्टर का तो मतलब मेरे लिए तो इट वाज एब्सोल्युटली ड्रीम कम ट्रू कि वो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी. तो सारे लोग जो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूँ अगर तू वैसा बोलेगी तो शायद वो बेटर फनी रहेगा. करेक्ट. ऐसा करें क्या, ऐसा करें क्या, ऐसा करें क्या. तो ये तो लगभग ऐसा लगता है कि आप अकेला ही मतलब एक बोझ उठा के नहीं जा रहे हो. तो सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, सारे लोग आपको आइडियाज दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं. एक टेक अगर बेटर हो जाते तो फिर वहां पे रुकते नहीं है, कहते कि यार ये अच्छी थी, एक और करके ट्राई करें, इसको पुश करके देखते हैं. तो फिर मेरे वो एक लोड सिर से मतलब उतर जाता है, यार कैसे पूछूं एक और टेक के लिए. तो वो वैसा तो सीन हुआ ही नहीं कभी. कमाल है, कमाल है. वैसे हालांकि ये आपकी दूसरी फिल्म है. पहली फिल्म जो आई थी लूट केस वाज लव्ड बाय एवरीवन, बट इट वाज रिलीज ऑन ओटीटी. सो थिएट्रिकल ये पहली रिलीज थी, कैसी लगी? हाउ वर यू फीलिंग अबाउट इट? इमेजिन करो आप थिएटर में जा रहे हो और आपको आपके 3 मतलब 2 तो उसमें से मेरे चाइल्डहुड मतलब हीरोइंस थे. हाँ. वो दिख रहे हैं और आपको और सो तुम ही तीनों जनरेशन के जो मतलब 3 ऐसे लोग जो 3 अलग डेकेड में एंट्री की. Correct. वैसा कह सकते हैं आप, राइट. वो आपके पर्दे में तो आपको कैसा लगेगा, मतलब वो आपको रियली मतलब आपका ड्रीम कम ट्रू आई. तो मेरे लिए तो बिल्कुल वैसे ही था. जब आपको ये स्टोरी पता चली, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट यू हैव रिटन द स्टोरी आल्सो. नो, आई हैव नॉट रिटन द स्टोरी. नो. सो जब आपको इस स्टोरी के बारे में पता चला, व्हाट वाज योर रिएक्शन? डिड यू फील दैट काफी किस्से जो है वो रियल लाइफ इंसिडेंसेस से भी मिलते जुलते हो सकते हैं? बिल्कुल. मतलब ये मेरा मानना है कि मतलब अगर आप शहर में रहते हो,
ठीक है, तो शायद एक गलत होगा कहना कि शहर में रहते हो तो आप शायद किसी को एयरलाइन के लाइन से जानते हो। मेरे ख्याल से हम सारे ही लोग किसी ना किसी को तो जानते हैं जो एयरलाइन के लाइन में काम कर रहे हैं या कर रहे थे जी। करेक्ट। तो कैसा है कि जब आप न्यूज़ में रीड करते हो ये सारी वाकया, मतलब ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि मतलब यू फील फॉर देम। और बहुत सारी कहानियाँ आपको पता है वो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू रियलाइज दीज स्टोरीज आर ऑल ट्रू। वन फाइन डे व्हेन दे वेंट बैक टू देयर कंपनी दे वर टोल्ड कि आज कंपनी बंद हो गई। करेक्ट, आज आपको उड़ान नहीं बनना है, आप घर से मतलब बन ठन के आए थे, आप वैसे घर चले गए। तो they were to seeing stars. I mean, they were dumbfounded. They didn't know what to do. Yeah. So there have been stories like that. Every incident, right, in the story, which you see, is actually real, but we kind of fictionalized it. The writers fictionalized it in a tale, sequenced it in a graph, so that it also makes an interesting watch. But they're all real incidents. सारे ही मतलब हकीकत है। गोल्ड स्मगलिंग देख लो आप। Yeah. हम तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डाल रहे थे, फिर हमने दोबारा सोचा डालना है कि नहीं। जब हम फिल्म बना रहे थे तो उस टाइम पे याद होगा आपको कि एक बंदा था जिसने यूरिनेट किया था प्लेन के अंदर। वो बहुत ही बड़ी एक इंसिडेंट बन गई, वो बहुत बड़ा एक हादसा बन गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे डालना है नहीं डालना है, सारी हकीकत ही। नन ऑफ देम आर लाइक नथिंग इज मेड अप हियर रियली। So yeah, I mean it is all true. Amazing. Now an all-women crew, and everybody enjoys these wonderful actresses that we've seen individually but together. अब इन तीनों को एक साथ डायरेक्ट करते वक्त tell us that before you went on sets, आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया और क्या कुछ ऐसी चीजें हुई that you realize कि अच्छा ये तो मैं बहुत सोच रहा था, इससे तो कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि इमोशनल सीन्स है जहाँ पे लोगों को रोना होगा। और यूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ तो हम ज़्यादातर मॉडल्स के साथ काम करते हैं, तो ये थोड़े एलिवेटेड लेवल के परफॉर्मेंसेस होते हैं। Correct. तो ये मेरे ख्याल में मेरे को ऐसा लगा जब हम शूट में जाने वाले थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मुश्किल होगा। बट मैंने भी ये लूट केस में तो मैं ये देख चुका था, जैसे कि कुणाल को रोना था तो वो हंसी मजाक करते रहते हैं, सर आपको रोने का टेक है, हाँ चलो रेडी, और वो ऑन कॉल चुटकी बजाते रोने शुरू करते हैं। या रसिका दुग्गल देख लीजिए आप, तो हम लोग तो सेट में मतलब ऐसे देखते रहे कि ये भाई साहब ये रिटेक के ऊपर रिटेक दे रहे हैं और असली पानी आ रहा है आंखों से, असली आंसू बहा रहे हैं। मतलब कोई ग्लिसरीन एक लेवल का, मतलब एक बहुत सारे परफॉर्मर्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैं क्लासेस कहता हूँ कि बोलते ग्लिसरीन नहीं बेटा, ग्लिसरीन बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग वो लेवल के लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी सीन शायद डिफिकल्ट होंगे शूट करने के लिए, लेकिन वो तो मतलब एकदम बहुत ही ब्रीजी निकल गया। तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। कॉमेडी में तो आप तो जानती हो तीनों मतलब क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आपने बेबो को देखा होगा जब वो पू थी, करेक्ट। आपने तबू जी को देखा होगा जब उन्होंने बीवी नंबर 1 किया हो। या उनका एक कॉमेडी का स्टाइल ही बहुत एक, मतलब मैं भी ब्रीफ करने के बाद मतलब मैं भी ऐसा कभी कभी कट बोलने भूल जाता था, तो कोई ऐसा धक्का मुर्दा कट 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 ऐसा बोलना पड़ता था, क्योंकि अब वो हर टेक में कुछ ना कुछ अलग करती थी वो, करेक्ट। तो उन्होंने तीनों ने मतलब अपना कैरेक्टर्स को इतना सीरियसली लिया कि वो बाय द सेकंड और द थर्ड डे ये हो जाता है। मैंने अब ये 2 शूट में देखा है मैंने कि बाय द सेकंड और थर्ड डे इनको पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर कैसे बात करेगा, कैसे खड़ा होगा, कैसे खड़ा ये कैसी खड़ी होगी, ये कैसा मतलब गुस्सा नाराज होगी तो कैसा होगी, अगर टेंशन में आ जाएगी तो वो जो तब्बू का जो पिल जो पॉप करने वाला जो सीन था वो हर दूसरे टेक में आते ले करूँ इसमें करूँ इसमें और कुछ करते हैं। तो फ्रैंकली मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो मतलब बह गए वो लोग इन देयर कैरेक्टर। ये 3 नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल होता। बट वर दे ओरिजिनल चॉइसेस? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, I came to the party by the time all the 3 actors were more or less in conversation, because I was told very clearly these are the actors. And I think they were glad that I was directing it. I got to know. So that really sweetened the party for me. That really sweetened the deal for me. Yeah, but these were, honestly, these are, to the best of my knowledge, these were the 3 original. I think Tabu, to watch her on screen in any genre is such a delight. लेकिन कुछ ऐसे scenes उनको देखकर, जैसे वो सामान बाहर रखना and all that, she was just so natural to it. Did that surprise you? Absolutely, I had no clue that's what she was doing. Because we had discussed that on many occasions.
there are some things that you just tell Tabu and you let it stew in the, like, you let it basically be in the back burner, right? There are some things that you will want to come and say कि मैं ये सोच रही हूँ, what do you feel? Okay. And then there are some things you'll say, I'll just give a take. You tell me what you feel about it. Correct. And then once she gave a really good take, you just see the response in the set, and then there is hardly, then I'll have to be a genius to say, you know what, that was good, but we can do something better than that. But वो तो हुआ ही नहीं कभी. What she was doing was she was literally making you laugh whenever she was doing something funny. Really, right? really. In fact, even the scene. These are all first takes, by the way. A lot of those things are first takes. Wow. So I still do 2 more takes because there's a director and he says, no, maybe ये तो तब्बू जी ने किया, मैंने क्या किया, मेरे को 2 take और करने दो करके मैं भी कुछ कोशिश करता, फिर बाद में edit में दिखते थे यार पहला take ही best था. How much did you laugh between the scene of Kareena Kapoor and Tabu, where she I don't remember how much we laughed, but we definitely chuckled at that time because you're also on a very tight schedule. Yeah. So you just feel it in your bones कि एक अच्छी take मिल गई हमको. But it was the most honest response anyone could ever give, because the way she goes back and she just does oh god, बस वो सबसे funniest था. मुझे लगता है कि that जैसा आपने कहा कि that आपकी पूरी जो टीम है वो एक फैमिली क्रू की तरह ही आ गई थी together. नहीं तो फिल्में बनाना बहुत मुश्किल है. मतलब जब सारे लोग हॉस्टाइल हो जाएंगे, मेरी लाइंस क्या है, मेरी पार्ट्स क्या है, am I looking good, am I looking best, वो जोन में तो कोई था नहीं, मुझे पता भी नहीं है लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं, बट वो मैंने बहुत कहानियां सुनी है लोगों के बारे में, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को ऐसा बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिला. कोई ऐसी बात आपको रियलाइज हुई दैट इट वाज गुड टू वर्क ऑन एन ऑल वुमेन क्रू एज अपोज्ड टू एन ऑल मेन, एंड व्हाई? दे ऑल लुक स्पेक्टेकुलर, राइट, व्हिच इज they scintillating, yeah, they are like beautiful women. I mean, how can you resist a frame with all 3 of them there? You can't take your eyes off them. Correct. All 3 of them beautiful in their own way. That I think is a weapon which you need to know when to use and when to not misuse. Right. So if you look at it here, they were so naturally beautiful, right? And not just by the way they were looking, but by what they were doing. And they never wanted to preen, look how cute looking am I, I am, kind of thing. They were basically वो डाल रहे थे अपने characters में, अपने lines जो डाल रहे थे. There was not a scene where, can you shoot me from here because I look really good over here. Yeah. None of that was going around. I think also the fact that, comedy had to play such an important role in the film. Yeah. That every dialogue had to have that right punchline. लेकिन बहुत बार औरतों को ये कहा जाता है कि that वो ज़्यादा comedy नहीं कर सकते जितना men. Would you like to No, उसमें क्या होता है ना कि ये तीनों है ना नखरे करने में अव्वल थे एकदम. और जब भी तक आप नखरे नहीं करोगे तो कॉमेडी, मतलब वो यू थोड़ा कैसा ना कि कॉमेडी करने के टाइम पे थोड़ा आपको शर्म को शेड करना पड़ेगा. अगर आप बहुत ज्यादा शर्मीले किस्म के हो तो वो कॉमेडी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जी. तो ये तीनों जो है मतलब वो बिरलिव, दे वर सो पॉलिश्ड एंड दे हैव बीन लाइक टाइम हैज पॉलिश्ड देम, राइट. सो इफ यू लुक एट तब्बू's experience, she's been around what, mid 90s, yeah, right. And if you look at they were started in 2000, yeah, and नहीं नहीं बोल के कृति ने कुछ 10 सालों में कुछ 17-18 फिल्में तो उसी ने कर ली है. करेक्ट. तो अगर आप उनको देखो वहाँ पे तो they're not ashamed to make mistakes. They're not ashamed to go out there and do something outlandish. Yeah. Right. Which sometimes I find in men. नहीं ये मैं करूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगूँ, वैसा हो जाता है. तो वो तो मेरे को इनके अंदर वो तो देखो very like unabashed about their comical timing. अच्छी नहीं लगी चलो और एक करते हैं. We try to do a set of takes till the time we were finally convinced कि यार ये style जम नहीं रहा है, कुछ और करें क्या. So then we'll actually go back to our drawing board, think for about a couple of minutes. Okay, how about we try this? So there was a lot of that going on. So I never felt like I was working with, I never literally like, I mean, what I felt with Kunal, for example, or what I'd feel with the Vijayakar. Yeah. Or Ranveer Shore. Ranveer Shore is a clown. If he decides to make you laugh, see again, it's another thing. Comedy is a kind of a talent, which is you can pretend to be very serious. You can't pretend to be funny. Right. You need to possess that talent, or you might find a germ of it in you,
and then you will develop it. You'll observe, you will use all your experience, you will read, you will watch, you'll absorb from the, from the environment, and then you'll hone it as a skill. So to me, these are the three best people who are on top of their game. Yeah. What was your thought when you heard about the censor board, cutting or removing some dialogues and gali-galoots? Were you okay with it? Nobody is really okay with course, things like that, because honestly, but I also understand where they came from. Correct. Because what would happen is, if they said yes to this, then the context of it will completely be ignored, and a whole lot of people will come and say, but you said okay to that. But then it becomes a huge onus to sit and explain to somebody saying, but wo context kuch aur tha. You know what I'm saying? I'm trying to understand. So it's Sorry, basically I'm very little- simple. If I use, let's say, an expletive, right? I remember having a conversation with somebody where they were saying, ये विजय वालिया को हराम ज़्यादा कहना ज़रूरी है क्या? So my understanding was, okay, हम बहुत सारे ऐसे, मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, जिसको मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने हजारों करोड़ों देश से लेके भागा है. अभी आप 3-4 लोगों का नाम अगर आप अगर जोड़ो कि उन्होंने कितना पैसा देश के बाहर ले गया है, तो करीब 75 से 80 हजार करोड़. आपको उनको बोलने का क्या मन कर रहा है? हमने तो सिर्फ इसको हरामज़ादा कहा है. तो ये कहा तो 2-4 लोग बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर सेंसर वालों ने इसको ओके कर दिया होता, तो कल लाइन लग जाती थी लोगों के, सर आपने उनको हरामज़ादा करने को बोल दिया. अब वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे. मेरे को तो ऐसे लोग देशद्रोही लगते हैं. हमारा कीमती टैक्स का पैसा लेके चले गए, इनको एक कंपनी चलाने के लिए उनको सब्सिडाइज पैसे दिए जाते हैं. करेक्ट. वो उसको लेके चले जाते हैं लोग. तो आपको क्या मन करता है उनको बोलने का? मैंने टैक्स भरा हुआ है, आपने टैक्स भरा हुआ है, हर उस बंदे ने जो टैक्स भरा हुआ है उसको उनको गाली देने का मन करेगा. करेक्ट. तो फिर वो सवाल उठ जाता है कि फिर what is appropriate context and what is not appropriate context. So this becomes a larger discussion. But you don't think anything to do with the fact that a woman is abusing, which is why they've also tried to chalao the No, I don't think it was a case of there was no sexism ki how can a woman say that. Yeah. I think by and large there is a certain diktat that they have and they try to adhere to that. It is I think very sex agnostic. यार मेल बोल सकता है लेकिन फीमेल नहीं बोल सकती है. हाँ बोल सकते थे, वो अलाउ करते थे, फिर आपको लेकिन वो यूए नहीं मिलता. करेक्ट. So those are the choices that we had to make, and we understood their constraint. So I remember there was Anil Kapoor sir also in the censor board, and we were all discussing it, and then we came out saying that it seems fair. What they're saying, asking for is fair. And honestly, there weren't too many of them. There were about, if you see this film anywhere abroad, you'll see there are about maybe 4 or 5 places more. Okay. Speaking about comedy, 2 wonderful actors were also part of this film, Diljit and Kapil Sharma. How was it working with them? A dream come true. They were like a dream in the sense that I'd only seen them. Everybody is grown up watching Kapil in the last a decade now. A little less than a decade on television, on the Great Indian Comedy Show and a whole lot of other shows. In fact, we've grown seeing Kapil Sharma come up. Yeah. We saw him in a talent show, right? Where he won the talent show. We've lived his journey. We've literally lived his journey, right? To work with him was, it was very easy working with them. But I was very excited. The entire crew was very excited to work with them. Because they're really people like that. There were a lot of dialogues we allowed Kapil sir to straight away ad-lib, improvise. Yeah. Otherwise, what is the fun? You get a Kapil Sharma and tell him, sir, आपको ये script बोलना है, उसमें मजा ही क्या है? So, I think Riya, AK, all of us are very open to the idea कि आप कुछ interesting करो sir. So there were many options that they would give. Diljit is somebody who it's very hard for him to repeat a performance, repeat a take. So every take of us, we had a hard time in the edit to say कि अभी ये take लें कि ये take लें. Because वो उनके सॉफ्टवेयर में ही नहीं है कि कोई एक टेक अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो उसी को उसी तरह रिपीट करेंगे वो. करेक्ट. तो वो एक अलग एजुकेशन था मेरे लिए कि कोई एक ऐसा बंदा कैसा इतना स्पॉन्टेनियस हो सकता है कि वो somebody literally lives in the moment. So in the moment if he felt like doing something else,
he'll do something else, but it'll be equally funny. It'll be equally effective. Yeah. You know, that's a, I don't know, that's like a, I mean, he's either a giant or a monster for me. So he's somebody which we couldn't figure out, saying, I mean, how is he doing that? How is he literally doing that? I love the fact that, you know, you're also attracting people that you're so comfortable with when it comes to comedy as a genre. Diljit ki baat ki, Kapil ki baat ki, Loot Case mein, Kunal Khemu, what a fine comedian he is. I Absolutely. think he's just so He's a natural. genius. And yeah, after watching Madgaon, everybody uses Genius. this. See, Kunal can write, he can sing, He can dance, and now he can direct. He can write he's pretty much written some lyrics in that film. Right? So he's like a multi-talented guy. I had written a post saying that I don't know what he's going to do next. And I literally told him, must you make us all feel like shit? You also wanted to direct now. Is it true that Amir Khan had called you after Loot Case and you weren't? Oh, he did. I don't know how this became like a huge story, but it was a week after that, or it was a Friday after the release. And I was at home with some friends and was like, it was a Friday evening. And we were just having a couple of drinks, and all my friends are like this. So they'll call up in voices, and you'll have a hard time saying who it is because it'll be from an unknown number. Chances are it'll be from his wife's number or a friend's number. So Eke spoke very sweetly to me and said, this is Amir Khan. I'm like, "Kaun sala Amir Khan?" I said. So he started laughing and he said, wait, I'll do a video call. So then I hung up and I got a little nervous. Oh. I told my wife, I might have just cussed the Amir Khan. So she said, no, can't be. So then Eke came on call and I profusely apologized, but he was like laughing. And he says, no, this happens a lot. And it's really sweet of him. Yeah. Any project that he really likes, he picks up the phone and he calls the people. He wanted to know. He had very pointed questions. It was almost like we all know that he's a very meticulous guy. He approaches his films in a very different way. Yeah. So he had notes, and I'm sure it was all mental notes. And if he was reading from somewhere, I couldn't see it. But he wanted to know, ये art किसने किया? ये आपका DOP कौन था? ये costume styling में जब आपने ये किया था, आपने ऐसा क्यों किया? So he took down everybody's numbers and he sent them all a very sweet message. Now who does that? Right? So yeah, this was What an a great incident. story. Absolutely. To always remember. So I was like a little miffed with all the guys. People were posting all those messages on Facebook. I said, boss, ये personal message होते हैं, इसको घर पे frame करने का रहते. So, but they were like, hey, come on, this is a once in a lifetime thing, man. I want to do this. And it's Amir Khan, man. It's Amir Khan. So, how are you taking all the love, the appreciation in right now? The films come out, बहुत प्यार मिल रहा है. आपके फोन शायद बंद ही नहीं हो रहे होंगे. So lots of people are messaging, lots of friends are messaging, lots of film fraternity people are messaging. It's a heartwarming thing. It really feels good. When a project becomes good, then everybody benefits from it. Yeah. I remember when our film Loot Case got some 8 or 9 nominations in Filmfare. Yeah. It was funny because some of those HODs were calling and saying, really? I got a Filmfare nomination? So this is literally what happens. If a project is good, everybody loves it, and then suddenly you are in contention for pretty much everything up there. That's wonderful. Hi, this is Rajesh Krishnan, the director of Crew, and you're watching me on Bollywood Hungama.